Hello friends, hope you all are doing good. So I will start from the fluid mechanics and I'll cover every topics of the fluid mechanics. So let's start. I will start from the basics. So firstly, what is fluid? Fluid, we all are aware of the fluid in our day-to-day life. So fluid can be defined as the substance which can flow. In fact, इसका कोई definite shape नहीं होता है. It requires the shape of the container, whether it is a vessel or it spills on the ground. फ्लूइड में केवल लिक्विड ही नहीं आते, गैसेस भी या एयर उसे भी हम फ्लूइड कंसीडर करते हैं बिकॉज उनका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा और वो भी फ्लो कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज वाटर, मिल्क, केरोसिन, एयर एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द फ्लूइड. Fluid can basically divide it into 5 types. These are ideal fluid, real fluid, pseudoplastic fluid, Newtonian fluid, and non-Newtonian fluid. I will explain each of these types one by one. So first is ideal fluid. Ideal fluid is a fluid which does not have any viscosity and also it is incompressible in nature, but in the real life practically there is no ideal fluid exist, and the example is water suspension of clay and fly ash. Next is real fluid. Real fluid में कुछ ना कुछ viscosity होती ही है. It has viscosity and it is compressible in nature. Real fluid implies a friction effect also. Its example is kerosene, petrol, castor oil, etc. Now coming to the pseudoplastic fluid. Pseudoplastic fluid can be defined as a fluid whose viscosity and consistency decreases instantaneously with an increase in the shear rate. जिसकी viscosity भी और consistency मीन्स उसकी thickness shear rate के increase होने के साथ साथ decrease होती जाए, उसे हम pseudoplastic में classify करते हैं. इस example की बात की जाए तो quicksand and ketchup are example of it. नेक्स्ट न्यूटोनियन फ्लूइड. न्यूटोनियन फ्लूइड सिंपली इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है अगर वो न्यूटोनियन लॉ को ओबे कर रहा है, न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है, एंड दीज लॉ इज स्टेट्स दैट द shear स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द shear स्ट्रेन, तो उसे हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे. इसका ये इंटायरली डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने पे. एग्जाम्पल्स आर वाटर, एयर, एल्कोहल. नेक्स्ट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. इट इज़ अपोजिट ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड. अगर ये न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे नहीं कर रहा है देन इट इज़ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. एग्जाम्पल्स इज पेस्ट, जेल, पॉलीमर सॉल्यूशन, एक्सेट्रा. नाउ टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड it is necessary to determine the properties of the fluid. So these properties are density or mass density, specific weight, weight density, specific volume, specific gravity, viscosity, surface tension, and capillary action. Let's understand these one by one. Firstly, density. It is simply the ratio of the mass and volume. It is denoted by the rho and its unit is kg per meter cube. Now the air density is 1.23 kg per meter cube. Specific weight. Specific weight is the ratio of the weight and volume. It is denoted by small w and its unit is Newton per meter cube. The specific weight of air is 12.07 Newton per meter cube and that of water is 9.81 into 10 to the power 3 Newton per meter cube. Specific volume. Specific volume is the reciprocal of the mass density or density and its unit is the meter cube per kg. Next is viscosity. Viscosity can be simply understood as the resistance offered between the two layers of the fluid. So it is also the property of the fluid. फ्लूइड में अगर दो लेयर्स के बीच में उनके फ्लो होने के बीच में जो रेजिस्टेंस लगता है उसे विस्कोसिटी कहते हैं. It determines the amount of the resistance of the fluid
to the shear stress. It is the ratio of the shear stress upon du by dy, and the formula is the mu equals to shear stress. Tau is defined as the shear stress, y is the distance between the two layers in which the resistance is applying, and u is the shear velocity. Next is dynamic viscosity. Dynamic viscosity is same, it is not different from the viscosity. It is the resistance to the shearing flow where adjacent layer moves parallel to each other with different speed. Kinematic viscosity. Kinematic viscosity is the ratio of the mu, dynamic viscosity, and density of the fluid, rho. Its unit is meter square per second. It is also expressed in strokes. So 1 stroke equals to 10 to the power minus 4 meter square per second. In CGS system, its unit is centimeter square per second. It is also called as momentum diffusivity. Now surface tension. Surface tension, it is also the property of the fluid to resist tensile stress on their surface is known as the surface tension. It is denoted by the symbol sigma. Surface tension we can understand by this diagram that the molecule A is resultant force is offered on is 0, whereas the molecule B, it has experiencing unbalanced force in the downward direction, and the molecule C experiences a resultant downward force. So we can understand this concept of the surface tension by this diagram. Capillary action. कैपिलरी एक्शन इज सिंपल. जब किसी ट्यूब को हम एक कंटेनर में रखते हैं जिसमें वाटर भरा है या जो भी है, तो उसमें जो राइज एंड फॉल हो रहा है उस ट्यूब में नैरो स्पेस में, तो वो राइज एंड फॉल कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है. तो कैपिलरी एक्शन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द राइज एंड फॉल इन द नैरो ट्यूब विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स. वो एग्जिस्टेंस एक्सटर्नल फोर्स जो होगा या तो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी हो सकता है या उसके टूवर्ड्स भी हो सकता है. मरकरी में हो सकता है, वाटर में भी कैपिलरी एक्शन होता है. इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे हेयर ऑफ द पेंट ब्रश, थिन ट्यूब, पोरस मटेरियल सच एज पेपर, प्लास्टिक, और जो नॉन पोरस मटेरियल हो गए जैसे कि सैंड. इन सारी चीज़ों में हम कैपिलरी एक्शन ईजिली देख सकते हैं. कैपिलरी एक्शन इंट्रामोलिकुलर फोर्स की वजह से होता है, जो कि लिक्विड और उस कंटेनर ये सॉलिड सरफेस के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उसकी वजह से कैपिलरी एक्शन अराइज होता है. इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. दिस इज द डायग्राम ऑफ द कैपिलरी एक्शन. वी कैन सी दैट वाटर, इसमें कैपिलरी वाटर राइज हो रहा है इस ट्यूब में, वेयर एज इन मर्करी वाटर फॉल हो रहा है. इसे हम राइज इन, इसमें राइज हो रहा है एंड मर्करी में फॉल हो रहा है. सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस. इट वॉज ऑल फॉर टुडे. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो कीप लर्निंग एंड अपग्रेडिंग योर सेल्फ.